हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स माने वेलकम टू राउतराई क्लासेस। आज आम दिवाली तो बाण फाण फुटई तापर एटा फर्स्ट क्लास दिवाली परे आम जाइतिले सेल कनेक्शन रे आम सीरीज जाइतिले। आज आम स्टार्ट करिबा पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। ओके बुझी पारछो तुम तो जानी थिबो मु आज सेटा तुमको शो करूची। सेल तो मुझे कही दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड टू नेगेटिव एंड। टॉर्च बैटरी जोटा आम करूचे डीसी डायरेक्ट करंट माने कांस्टेंट करंट। दिस इज द सिंबल ऑफ डीसी। ओके एमतिया केते गुडे सेल को आम कोन करिया सीरीज कनेक्शन जाईची पैरेलल कनेक्शन को देखेबा। ओके पैरेलल केमिति कनेक्शन तुम आगे फिगर देखो। पैरेलल रे देखो पॉजिटिव सबु सेल रो पॉजिटिव साइड टाको मु गोटे एंड रे जोडुची। सेल रो पॉजिटिव एंड केतेटा जोड़िबा एन टर्म्स जोड़िबा बा एन सेल्स को आमे पैरेलल कनेक्शन को नबा। ओके सिमिलरली नेगेटिव एंड से देखो गोटे पॉइंट रे नेगेटिव एंड गोटे पॉइंट रे नेगेटिव एंड गोटे पॉइंट रे। ये जो डॉटेड मु देइची ए डॉटेड रे केतेटा सेल्स मु जोडुची मते मालूम नाही। 3टा हो पारे 4टा हो पारे 5टा हो पारे तेणु आम लास्ट नवा एन टर्म्स। एटा होची फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक दिस अप टू एन सेल्स। एन मे बी 5 6 7 लाइक दिस। ओके एगुडा सब नेगेटिव टर्मिनल छोट गारटा बड़ गार होची तमरो पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी हम तुमको कही पॉजिटिव कोटा जोटा ऊपरटा ठोपी भलिया थिबो आ तळ प्लेनटा होची नेगेटिव। ओके नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव मीन्स हायर पोटेंशियल। ताले मु सब जाक देखो पॉजिटिव वन साइड बा वन एंड ऑल नेगेटिव टर्मिनल्स अनदर एंड। ओके देन योर गिव रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एटा टोटल कंप्लीट सर्किट हे गला। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आमे नवा दिस इज कॉल्ड योर सेल ईएमएफ ई दिस ईएमएफ ई दिस ईएमएफ ई। ओके इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज कॉल्ड आर दिस इज कॉल्ड आर दिस इज कॉल्ड आर। ओके वर्तमान क्वेश्चन इज करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हबो एक्सटर्नल सर्किट रे। देखो पॉजिटिव रु करंट आसिला then pass through this then enter to negative in external circuit. Okay so what is the parallel connection of cells? Parallel connection in geometrical in figure you see when the positive terminals of all cells देखो positive terminals of all cells are connected at one end and negative terminals of all cells are connected at another end. Then this type of connection is called your parallel connection. Okay जेतले हमें प्रॉब्लम को जिबा मैथमेटिकल को जिबा प्रॉपर्टी बेस को जिबा then EMF is same in all. EMF same means समितिंगर EMF equal सेटी सीरीज रे कोन नैथिली टोटल EMF is equal to algebraic sum n number of cells रो टोटल EMF होची NE गोटे सेल रो EMF E n number of cells रो NE। एठी किंतु EMF is E माने टोटल EMF is equal to E in parallel connection. This is the most important. Okay so question is what is parallel connection of cells. Cell ro parallel connection कौन? So you write in parallel connection the connection of cells in which all positive terminals of cells are connected at one end and negative terminals of all are connected at other end. Then this type of connection is called your what? Parallel connection. In other terms when the EMF total EMF of the connection is same means EMF of one cell
then it is called your parallel connection. Okay, find expression for current. Expression for current or total current, you can write total current. ताल टोटल करंट पे गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मत दबाक पड़िबो. ओके, ताले हमें कंसीडर रे कोन नबा. कंसीडर n number of cells are connected in parallel is as shown in figure. Then consider figure तमे कोन करछो. फिगर करछो पैरेलल कनेक्शन. तेनु सारू कहबो सर देखंतु n number of cells are connected in parallel is as shown in figure. Clear? Then come to let. Let कोन नबो. EMF of is equal to EMF of each cell. Each cell. प्रति सेल रो EMF होची E. आउ कोन नेचो R is equal to internal resistance. Internal resistance. Internal resistance means the resistance of this cell. Okay, SLR like this. सबु सेल गुडा के इक्वल तेनु ताकर रेजिस्टेंस मध्ये इक्वल. इंटरनल रेजिस्टेंस, that is internal resistance of cell. Next, R is equal to external resistance. External resistance. External resistance कहला माने हमें सर्किट रेजिस्टेंस को बुझौछि. जहां में देइथिबा तमरो बॉल हो, जहां तमरो ए बैटरी जोगु जहां तमे यूज करछो, that is called your external resistance. Okay, I is equal to current. You can take small I or capital I. Okay, this is called to your current flow, positive to negative. Now you know Ohm's law. Ohm's law, V is equal to IR or I is equal to, you find current. Your question is expression for current. So I is equal to V by R. What is V? V is equal to your PD. Here, parallel case, total EMF is equal to your PD. PD EMF means the open circuit. Open circuit re tomorrow total potential difference between two terminals, that is equal to your E. That is equal to your EMF. So this is called to your E divided by. What is the resistance? Resistance, you see, this is called your R, external resistance, plus total internal resistance. Internal resistances, you see, n number of resistances, n number of cells are connected in parallel. In case of a parallel connection, you know 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, like this. So you take here 1 by R is equal to 1 by R plus 1 by R. You see, small r, your internal resistance, up to n numbers. Okay, देखो up to n times. केतेटा तुम बैटरी देइछो n. So this is called to n by r, 1 by r, or r is equal to your r by n. Okay, this is called to your internal, total internal resistance of the cells. So total internal resistance of cells and external resistance are in series combination. So series means you add here R is equal to, in place of R you write external resistance capital R plus total internal resistance R by N. Okay, this is called the expression for current. Clear? बर्तमान फिगर टिके लिखै दउची, आउ थरे बतै देबी. You see, this equal to this. This is a connection, this is called your current. You see, EMF of each cell, R is equal to internal resistance of each cell, R is equal to, capital R is equal to external resistance, I is equal to current. The question is, find the expression or formula for current produced. केते करंट तुम पाइबो ए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ओम्स लॉ तुम यूज करिवो सीरीज केस रे आल्सो. V is equal to IR, I is equal to V by R. V is equal to PD. टोटल PD सर्किट रे केते, टोटल PD इन पैरेलल केस इज इक्वल टू इक्वल. इक्वल माने गोटाकर PD जति की बा EMF जति की टोटल
V एठी आमे पाइबा सेतिकी. So this is called your EMF. Okay, then divided by resistance. Resistance, external resistance is this. Then internal resistance R all are in parallel. Parallel case say this is called your R by N. N number of cells. So R, this R and this R all are in series combination. So this is called to R external resistance plus internal total internal resistance of the cells R by N. So I is equal to this. Your expression E by R plus R by N. Clear? Short question may come.